Students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss about first chapter of mathematics of class 10, real numbers. Students, in class 9 we study about the real numbers, especially about the irrational numbers. In this chapter we shall continue our discussions about the real numbers. On real numbers we begin with two important results. First is eclipse division lemma, and the second is fundamental theorem of arithmetic. Okay, students, lemma. What is lemma? Lemma is a proven statement. Lemma is a proven statement used for proving another statement. लेम्मा एक प्रकार का प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा. इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज. इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा, इट इज वेरी सिंपल. फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, with a is greater than b, there exist unique whole numbers q and r. There exist unique whole number q and r such that कि a equal to bq plus r, where the value of r is greater than equal to 0 and less than b. Okay, students, suppose that कि two given positive integers. What is the positive integers? Two given positive integers, it means 1, 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. That is the positive integers, a and b, where a is greater than b. Where there exist unique whole numbers q and r such that कि a equal to bq plus r. Look, students, here a is divided by b, that is the quotient is q and remainder is r. Okay, here a is the dividend, v is the divisor, q is the quotient and r is the remainder. Okay, we use the formula कि dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. सपोज दैट अगर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 14 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ओके, तो 3 4 जा 12, 2 is the remainder. तो 14 is the dividend, 3 is the divisor and 4 is the quotient and 2 is the
रिमाइंडर। तो जब चेक डिवाइड हमारा चेक करना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो हियर डिविडेंड इक्वल टू ए इक्वल टू डिवाइजर बी, कोफिशिएंट इज क्यू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। व्हाट द वैल्यू ऑफ द आर? आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 के इक्वल अगर हम पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। 3 को हम 15 से डिवाइड करते हैं सपोज दैट, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0। ओके, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 16 में तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1। फिर 3 से डिवाइड करते हैं 17 में तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2। फिर 3 से डिवाइड करते हैं 18 में तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 0। अब स्टूडेंट्स 15 इज द डिविजिबल बाई 3, रिमाइंडर इज 0। 16 इज डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज 1 2 एंड अगेन 0। का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द आर इज 0 एंड ग्रेटर देन 0। 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन डिवाइजर। So the value of the r is greater than equal to 0 and less than divisor, less than b. Here b is the divisor. Okay, so what is the Euclid's division lemma? For given two positive integers a and b, where a is greater than b, there exist two unique whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, where the value of the r is greater than equal to 0 and less than b. It is very simple. Okay, next is algorithm. An algorithm is a series of well defined steps. An algorithm is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problems. An algorithm is a series of well defined steps. Algorithm, what is algorithm? Algorithm is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. Algorithm एक प्रकार का फ्रीज है जो किसी भी क्वेश्चंस को, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड प्रदान करता है और उस मेथड के जो फ्रीज हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उसके फ्रीज को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं. ओके, एंड द Euclid's division algorithm is a technique to compute the HCF of two numbers a and b where a is greater than b. ओके, अब स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे Euclid's division algorithm पर कैसे हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज use Euclid's algorithm to find the HCF of 272 and 1032. Okay, for solution we find
the HCF of 272 and 13 and 1032. Okay. For students, here 1032 is greater than 270. So 272 से डिवाइड करेंगे 1032 में, तो 3 2 या 6, 3 7 जा 8. ओके, तो 12 6 जाएगा 6, 2 1 and 2. Okay, so my first step is step 1. We use Euclid's division algorithm A equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B. Okay, so here (1032) equal to divisor 272 multiply 3 plus 260. Okay, and next step is 260 divide 272. इस स्टेप्स को जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो 216 डिवाइड 272, 1 6 left is 5 and cancel. Next step is step number 2, remainder 260 do not equal to 0. So we use Euclid's division algorithm. We use Euclid's division algorithm. A equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B. So 272 equal to 216 multiply 1 plus 56. Division multiply quotient plus remainder. Okay. So next step is 56 is divided by 260. Okay, 216 divided by 56. So 8 4 cancel. Step 3, here 56 is not equal to 0. So we use Euclid's division algorithm. A equal to BQ plus R, and where R is greater than equal to 0 and less than B. So we write it 260 equal to 56 multiply 3 plus 48. Okay, step 3rd, and next step 48 is divided by 56. 56 is divided by 48,
1 8. So of step 4 we use here 48 each do not equal to 0. We use eclipse division algorithm and we write 56 equal to 48 multiply 1 plus 8. We use eclipse division algorithm and we write 56 equal to 48 multiply 1 plus 8. And next 8 is 48 is divided by 8, so next of step 5 8 do not equal to 0. For we use eclipse division algorithm A equal to BQ plus R. So we write 48 equal to 8 multiply 6 plus 0. Here remainder is 0. So we say that hence the HCF of 272 and 1032 is equal to 8. Here division is the HCF of 272 and 1030. Okay.